तो हाय फ्रेंड्स मु मधु वेलकम कर दिल से तुम्हारा डिस्कशन करबा पॉलिटी रो वन शॉट क्वेश्चन एंड आंसर आम डिस्कशन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपण मनकर आरआई एसडीएस एसपीएस किबा आपण मनकर अपकमिंग पीओ एग्जाम हेगला किबा जे ओडिशा पुलिस ए सब एग्जामिनेशन ओके तो डेर न करी चलतो आम वीडियो देखा देखंतु व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द पॉलिसी डीपीएसपी ओके डीपीएसपी टा कौन आयरलैंड रु बर करा जायतिला ओके पार्ट आईबी रे मेंशन कर दिया जायछि डीपीएसपी को पार्ट रे मेंशन करा जायछि ना पार्ट आईबी रे मेंशन कर दिया जायछि ओके देन हम देखिबा द डीपीएसपी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द ओके डीपीएसपी हो हमर कोन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ओके इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु अडॉप्ट करा जायछि ओके देन हमरो व्हिच आर्टिकल डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज हो हमर कोन आर्टिकल 51 ए रे जोटा कि डील करूछि आर्टिकल 51 ए हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटी हो हमर केतरा रहिछि ड्यूटी हमर रहिछि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली फंडामेंटल ड्यूटीज हमर केतरा रहिछि वर्तमान वर्तमान हमर 11टा फंडामेंटल ड्यूटी हमर रहिछि केतरा रहिछि ना 11टा हमर फंडामेंटल ड्यूटी हमर रहिछि ओके देन व्हिच फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन द वाज द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बर फंडामेंटल ड्यूटीटा होछि हमर रूसिया रु हमर बर करा जायछि ओके रूसिया रु बर करा जायछि व्हिच अमेंडमेंट एट द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रंस एज 6 रु 14 वर्ष ओके 1886 अमेंडमेंट रे ओके 2002 रे जोटा कि हमर कोन ऐड कर दिया जायछि 6 रु 14 वर्ष पिला मानको केमती फ्री माने एजुकेशन चिल्ड्रन मानको प्रोवाइड करबार सेटा होछि ऐड कर दिया जायछि ओके देन हमर आर फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल ओके तो नो देयर आर नो जस्टिसेबल ओके इनफोर्सेबल होछि बाय कोर्ट सेटा होछि देयर आर नो जस्टिसेबल ओके देन इमरजेंसी अमेंडमेंट एंड प्रीएम्बल हम देखिबा ओके ओरिजिनली हमरो आर्टिकल केतरा रहितिला ओरिजिनली होछि केतरा रहितिला 395 टा हमरो आर्टिकल रहितिला वर्तमान हमरो आर्टिकल केतरा रहिछि ना 48 टा आर्टिकल रहिछि आ अमेंडमेंट केतरा रहिछि ना 100 रु ऊर्ध्व रहिछि हमरो अमेंडमेंट ओके ए लॉ कैन बी enacted or executed or issue even contrary to article 19 during proclamation of emergency okay a causes by war एक्सटर्नल एग्रीगेशन हेगला आर्टिकल सेटा होछि हमर कोन 358 रे मेंशन करि दिया जायछि ओके इमरजेंसी हमर केतरा रहिछि स्टेट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके तो नेशनल इमरजेंसी होछि केते आर्टिकल केते 352 आउ स्टेट इमरजेंसी होछि 356 आउ फाइनेंशियल होछि 300 केते 60 ओके हमरो केतरा इमरजेंसी लागुतिला लागितिला इंडिया रे तीनटा हमरो तीन थर लागितिला ओके केबे 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 ना 1961 रे गोटे 71 रे गोटे आ गोटे 1975 रे गोटे ओके तीन थर हमरो इमरजेंसी लागितिला under which article of the constitution can be emergency be declared in India on account of war or external aggression okay तो सेटा होछि हमर आर्टिकल 352 ओके नेशनल इमरजेंसी ओके देन हम देखबा व्हिच ऑफ द सेट ऑफ आर्टिकल डील विथ इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 आउ 56 आउ 360 ओके डील करूछि ओके रोटेट कर देबा just wait friends a proclamation of an emergency under which articles 352 required approval of the parliament within okay 1 month kate 1 month bitore okay
Okay, the two words that were ensured by the 42 amendment to the preamble of the constitution. Okay, 42 amendment रे okay 1976 रे कोकोटा ऐड कर दिया जाइतिला preamble of the constitution रे socialist आ गोटे secular socialist आ गोटे कोन secular ऐड कर दिया जाइछि. Okay, which article empower the president to impose financial emergency. फाइनान्शियल इमरजेन्सी आर्टिकल केते 360. ओके, नेशनल जदि पचारे 352. आ गोटे स्टेट इमरजेन्सी आर्टिकल केते 356. ओके, हाउ मेनी टाइम वाज द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड. ओके, प्रिएम्बल केते थरा अमेंड करते सेटा होची 1 गोटे थरा. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी amended according to the procedure laid down in the following article. तो आर्टिकल सेटा आर्टिकल 368. ओके, 368. which period below depict internal emergency in India. आर्टिकल 350 सेटा 25 जून 1975 टू ओके आमर 21 मार्च 1977 पर्यंत. ओके, तो सेटा से पीरियड भितर आमर कोन इंटरनल इमरजेंसीटा आमर बिलो करथिला डिफिक्ट रे. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ले डाउन इन द आर्टिकल. तो सेटा होची 368 ना 368 आर्टिकल. देन हम देखबा फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हम देखबा. देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolish the practice of untouchability. तो अनटचेबिलिटी से आर्टिकल कहते abolish कर दिया अनटचेबिलिटी को आर्टिकल रे मेंशन कर दिया जायछि. आर्टिकल हमरो कहते 17. ओके, देन आर्टिकल 14 of the Indian constitution guarantee Indian citizen. तो आर्टिकल 14 हमर कोन कहउछि ना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. Okay, which article of the Indian constitution include the fundamental duties of the Indian citizen. तो सेटा होची आर्टिकल कहते आर्टिकल 51 ए रे. ओके, आर्टिकल 51 ए रे. ओके, then article 17 of the Indian constitution provide for okay abolition of untouchability provide କରୁଛି article 17. okay, by which amendment where fundamental duties added to the constitution. केउ amendment रे fundamental दिया जायछि तो सेटा होछि हमर 42 amendment रे. ओके, amendment रे हाँ राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जायछि ना सेटा होछि 44 amendment रिमूव कर दिया जायछि राइट टू प्रॉपर्टी को 300 इलीगल वे सेटा रोका जायछि 31 आर्टिकल रे थिला सेटा. ओके, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होछि को आर्टिकल प्रोवाइड करूछि सेटा होछि आर्टिकल 32. ओके, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. ओके, डिलीट कर दिया जायछि रिमूव कर दिया जायछि 44 अमेंडमेंट सेटा डिलीट कर दिया जायछि राइट टू प्रॉपर्टी को. ओके, which was become a legal right under 44 amendment रे सेटा राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट अंडर रे रखा जायछि. ओके, राइट टू प्रॉपर्टी को. ओके, which constitutional amendment act deal with the elementary education as a fundamental right. Okay, 86 amendment. Okay, 86 amendment. then the 5 read हम देखिबा हमरो which article रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower सुप्रीम कोर्ट टू इशू. ओके, तो सेटा होछि कोन से इशू लेबे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा सेटा होछि आर्टिकल केतरे मेंशन होछि सेटा होछि आर्टिकल 32 रे मेंशन कर दिया जायछि. which article empower high court to issue writ the enforcement of fundamental duties. तो आर्टिकल सेटा केते आर्टिकल 226. ओके, which writ is known as the bulwark of personal liability. ओके, सेटा होछि habeas corpus. ओके, habeas corpus the literal meaning of the writ mandamus stands for we command. Okay, we command. which writ is issued by a higher court to lower court to prevent
from from exceeding its jurisdiction সেটা হচ্ছে কোন prohibition okay prohibition preventive in nature prohibition which it is to quash and order fast and inferior court or authority okay সেটা হচ্ছে সে theory okay যেটা কি correct in nature কু okay which writ can be issued against both public authorities ଆଉ ଆମର private individual for illegal detection ତ ସେଟା ହଉଛି habeas corpus which writ is issued to inquiry into the legal of the claim with a person assigned to public office ରେ ତ ସେଟା ହଉଛି ଆମର କ'ଣ warrant okay literally meaning ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି by what authority okay by what authority okay would describe article 32 रे okay right to constitutional remedy mention कर दिया जायछि ना सेटा होछि तो art of the soul of Indian constitution बोली कहबा okay के कहिथिले सेटा के describe करथिले तो डॉक्टर पी.आर. आंबेडकर हमरो describe करथिले okay then can the high court issue writ for purpose other than the enforcement okay yes under article 226 article okay whether writ okay then the supreme court the nature of the constitution and state देखिबा how does the constitution of indian describe in india as amro union of state okay union of state what mean when the constitution declare india secular state okay the state regarding religious as a private affair of a citizen do not discrimination on this basis okay the mind and idea of the farmer constitution are reflected in india तो सेटा हूँ प्रिएम्बुल रे हमर कोन मेंशन अछि ओके प्रिएम्बुल रे हमर मेंशन अछि then देखिबा which was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution बोली describe करथिले सेटा होची right to constitutional remedies okay right to constitutional remedies in india legal sovereignty is vested with the constitution okay constitution हमर mention अछि which consider the architect of the indian constitution के consider करथिले architect of the indian constitution बोली B.R. Ambedkar okay which custodian of the indian constitution chief justice of india okay it is federal in form but unitary in spirit okay it is a कोन federal in form but unitary in spirit okay who describe the indian constitution as quasi federal बोली describe करथिले के प्रोफेसर केसी वेयर प्रोफेसर हमर के केसी वेयर okay then which praises the preamble the ultimate source of authority के okay को pages रे mention ultimate source of authority with the people of india declaring the preamble okay sovereignty democratic socialist secular democratic republic okay then date ଆମେ discussion କରିବା okay when was the constitution assembly form केबे फॉर्मଥିଲା constitutional assembly ଟା 6 डिसेंबर 1946 ରେ ଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 21 କୁ ओके
हाँ 20 आउ 21 माने नेशनल माने इमरजेंसी को आम सस्पेंस करिपरिबा नाही who can impossible reasonable restriction over fundamental right okay parliament सेटा होची कोन parliament okay then in which case did the supreme court all the that fundamental right are amendable okay goloknath case okay goloknath case रे आमे कोन impossible reasonable to restriction okay sorry क्यों केस रे माने सुप्रीम कोर्ट ऑल करता है फंडामेंटल राइट टा सेटा होची हम कोन गोलोकनाथ केस रे ओके गोलोकनाथ केस इंश्योर्ड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए आर्टिकल टा सेटा होची क्यों आर्टिकल माने कॉन्स्टिट्यूशन रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड कर दिया जायछि केबे 2002 रे ओके which fundamental right prohibit traffic in human being and forced labor right against exploitation okay article 23 ରୁ 24 आर्टिकल केते 23 ରୁ 24 हां which article allow for the freedom to manage religious affair सेटा होची आर्टिकल 26 रे मेंशन होची ओके what is the main objective of fundamental right देखो fundamental right टा होची हमर कोन पार्ट 3 रे मेंशन कर दिया जायछि सेमिति डीपीएसपी जदि पतले कोन करबा पार्ट आईबी रे मेंशन कर दिया जायछि फंडामेंटल ड्यूटीज ओके दिया जायछि आर्टिकल 51 ए रे ओके आर्टिकल कोन 51 ए रे ओके हां राष्ट्र इलेक्शन संपर्क रे 51 आर्टिकल रे मेंशन कर दिया जायछि ओके आउ वाइस प्रेसिडेंट्स मानकर सेटा होची 63 रे मेंशन कर दिया जायछि ओके A federal structure for India was first put forward by the Act of 1935 okay which exercised the most profound influence in forming the Indian Constitution the Government of India Act 1935 okay the Government of India Act 1935 was in person which commission क्यों कमिशन आसला तो साइमन कमिशन इंडिया को केबे आसला 1928 रे तो साइमन कमिशन रे जने भी इंडियन मेंबर के नथिले तेणु कहते साइमन गो बैक बोली कहते ना हु डेस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज ओके के डेस्क्राइब करते पंडित जवाहरलाल नेहरू ओके इन विच एक्ट द टेरिटोरियल डिविजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज डन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 okay which of the following act introduce separate electorate community or act of 1909 okay when was the first central legislative assembly constituted सेटा हो 1921 रे okay 1921 देन देखिबा बोरिंग एंड इन्फ्लुएंस सम देखिबा बोरिंग फीचर गुडा कम द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड जुडिशियल रिव्यू टा करती कोड जो ओरिजिनेट हेतिला सेटा होची यूएस रो ओके फ्रॉम व्हिच कंट्री वाज द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन टा कोटू बरो करा जायतिला सेटा होची कनाडा रो ओके आइडिया ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटा यूके रो बरो करा जायतिला ओके हम गोटे कांसेप्ट रहिची सिंगल सिटीजनशिप कोटू रो हमरो अडॉप्टेड करा जायतिला एटा सिंगल सिटीजन टा यूके रो ओके यूके रो the method of impeachment of the president of India is adopted from एटा यूएस रो अडॉप्ट करा जायतिला the concept of rule of law okay special feature of constitutional system सेटा ब्रिटेन रो okay name of the country from which the measure for amendment was borrowed सेटा होची हमर कोन साउथ अफ्रीका रो okay which country was a federal supreme court to constitution like the Indian Federation सेटा होची हमर कोन यूएस रो हमर बर करा जायछि ओके फंडामेंटल राइट ता हमर कोडे यूएस रो बर करा जायछि ना यूएस रो आ डीपीएसपी ता आयरलैंड रो ओके डीपीएसपी ता होची
आयरलैंड बरो कर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोली कहबा डीपीएससी रो प्लेटफॉर्म। ओके विधानसभा आउ विधान परिषद देखा देखो तू आउ मेनी स्टेट इन इंडियन करेंटली आवे बाइकैमरल लेजिस्लेटर विधानसभा माने विधान परिषद। ओके बाइकैमरल लेजिस्लेटर कुंभ तो यूज करबा कुंभ। ओके उत्तर प्रदेश कर्णाटक बिहार महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना यही सबू स्टेट रे हमर कोन बाइकैमरल लेजिस्लेटर रही आमर ओडिशा कोन यूनिकैमरल ना यूनिकैमरल ओडिशा। देन देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते 500 मेंबर। ओके व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ विधान परिषद रो 40 मेंबर ना एक्सेप्शन। हु इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा स्पीकर। स्पीकर विधानसभा रो ऑफिसर तो का द्वारा प्रेसाइड करा जाए स्पीकर द्वारा। ओके व्हिच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कंसिडर्ड परमानेंट बॉडी विधान परिषद। ओके व्हाट इज द मैक्सिमम गैप अलाउ बिटवीन टू सेशन रे ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। टू सेशन रे हमर कोन स्टेट लेजिस्लेचर मैक्सिमम बिटवीन गैप थाए 6 मास को। ओके मैक्सिमम हमर 6 मास गैप थाए। ओके व्हाट इज द टेनर ऑफ द मेंबर ऑफ द विधान परिषद रो मेंबर मानकर केते टेनर से मानकर 6 वर्ष ना कार्यकाल होची 6 वर्ष with 1/3 of the member returning every 2 years। ओके माने एवरी 2 वर्ष रे से माने 1/3 मेंबर रिटायर नहीं तांती। ओके व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट विधानसभा इंडिया रो उत्तर प्रदेश ना केतरा मेंबर रहिचंती 403 403 टा रहिचंती। ओके व्हिच फ्रैक्शन ऑफ मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर टू द विधान परिषद 16। ओके 16 मेंबर आमर टोटाल मेंबर द्वारा विधान परिषद रे से माने नॉमिनेट होतांती गवर्नर को द्वारा। ओके व्हिच बॉडी वाज द मेंबर सॉरी व्हिच बॉडी इज द पावर टू क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट पार्लियामेंट। ओके तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके काउंसिलिंग आर इलेक्टेड बाय असेंबली द्वारा इलेक्टेड होतांती 1/3। ओके 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग रे इलेक्टेड होतांती मेंबर गुडा को। ओके तो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग काउंसिल में बी क्रिएटेड और अबॉलिश करा जाए पार्लियामेंट को द्वारा। अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बोली कहबा। ओके व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंबरशिप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग रो ताको मानकर 6 वर्ष ना प्रति 2 वर्ष रे विधानसभा रो केते 30 वर्ष। ओके द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली से माने लोक मान को द्वारा इलेक्टेड होतांती ना लेजिस्लेटिव असेंबली रो लोक मान मेंबर गुडा को डायरेक्टली से माने लोक मान को द्वारा इलेक्टेड होतांती। तो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर स्टेट रो का द्वारा से माने रेस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ विधान परिषद आर्टिकल 169 रे मेंशन अछि। ओके व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द विधानसभा रो मेंबर हेबा पई मिनिमम एज केते रिक्वायर्ड करता है 25 वर्ष। ओके व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर द विधान परिषद 30 वर्ष। ओके 30 वर्ष हमरो मिनिमम एज रिक्वायर्ड करता है इलेक्शन हेबा। ओके विधान परिषद रे इलेक्शन पाई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड लोकल गवर्नमेंट देखंतु अंडर व्हिच आर्टिकल कैन बी द गवर्नर रिसर्च बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल सेटा 200 रे मेंशन अछि। ओके आउ व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सेटा होची 73। ओके अमेंडमेंट 1992 रे। ओके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मेंशन अछि। ओके आउ क्यों पार्ट मेंशन कर दिया जाय सेटा होची हमर कोन पार्ट आई एक्स रे मेंशन कर दिया जाय। आउ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटा होची कोन पार्ट आई एक्स ए रे मेंशन कर दिया जाय सेटा होची 73 अमेंडमेंट। ओके 1992। ओके
status ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। What is the minimum age required to become member of the legislative council? 30 okay 30 ବର୍ଷ। which body audit local self government institution ବୋଲି କହିବା state audit department okay state audit department। what is the term office of for a member of the state legislative council? 6 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ। okay which schedule contain function of municipalities সেটা schedule 12 ରେ mention ଅଛି। okay schedule ଆମର କେତେଟା ରହିଛି? schedule ଆମର 12ଟା schedule ରହିଛି। okay what is the quorum of the state legislator? quorum সেটা হচ্ছে 1/10 of total member of okay 1/10 of total member okay quorum ର। which committee has no from राज्यसभा estimate committee रे okay राज्यसभा एमपी माने नथांती estimate committee। the chairman of the public account committee is usually leader of opposition leader तांती chairman रहतांती ना। financial committee of parliamentary include public account committee estimate committee public undertaking committee एगुड़ा को include रहता है। money bill can be introduced the assembly with prior permission of okay governor of state रो governor को permission रे money bill टा हमरो introduce दिया जाए। okay article 110 रे mention कर दिया जाए ना money bill टा। then an ordinance issued by the governor is subject to approval by state legislature okay state legislature। an ordinance issued by the governor without approval shall be amaro elected for 6 weeks okay 6 weeks। a person can not being a member the legislature for 6 months okay 6 months in relation to the state government local government exercise delegated authority the state election commission supervises municipal elections under article 243 in which year where the state recognized on a linguistic basis okay केबे बनथिला linguistic basis तो सेटा होची 1956 रे okay who decide whether a money bill or not in the state legislature का द्वारा डिसाइड करा जाए स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओके द्वारा हमरो एरा मनी बिल की नुए ता डिसाइड करा जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले ऑन ऑर्डिनरी बिल पास बाय असेंबली पर मंथ ओके विथ इन हाउ मेनी डेज लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग रिटर्न ए मनी बिल केते दिन भितर रिटर्न हेता मनी बिलटा सेटा होची 14 दिन भितर ओके 14 दिन भितर। which part of the Indian constitution deal with DPSP added करा जेतला Irish constitution रो ओके main objective of DPSP to establish a welfare state okay separation of judiciary from executive is mentioned in DPSP article 50 रे mention अछि। fundamental duties were added by which amendment 42 amendment okay which article deal with the fundamental duties सेटा होची हमर कोन आर्टिकल 51 रे आर्टिकल 51 ए रे ओके हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज देयर आर प्रेजेंट 11टा रहिछि। हां रूसिया ऊपर करा जायतिला ना फंडामेंटल ड्यूटी ता आ व्हिच अमेंडमेंट एडेड द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 4 ରୁ 14 वर्ष पिला माने ओके which amendment added the 11 fundamental duties education for children 6 to 14 years 86 amendment act 2002 okay are fundamental duties enforceable by court no there are no justiciable okay देखो which state is at their longest service governor Tamil Nadu governor
R.N. R.N. Robbie, okay, who admitted the Union territories, Lieutenant Governor, okay, Union territory କିଏ ଥାନ୍ତି ଆମର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଥାନ୍ତି। Can a serving governor can be removed easily? No, can be removed only the president द्वारा remove କରାଯାଏ। Okay, advice of whom does the governor act? Counseling of minister of the state. Is the governor a member of the? She can address and send messages tweets. Okay, who who recommended the name of the chief minister to the governor? किए रेकमेंडेड करता है लेजिस्लेटिव पार्टी विथ मेजोरिटी सपोर्ट करता। इन विच सिचुएशन कैन द गवर्नर रिजर्व ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट consideration when the bill may conflict with the constitution or impact power of the high court? What happened if a state has a hung assembly? Governor may be invite leader of largest party coalition to form government at his discretion. Which office does the governor hold during a president rules in a state? Executive head of the state administration. Okay, what is the tenure of governor? ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ until further order of the president. Okay, 5 years. हाँ, who is the chief advisor to the governor? Chief advisor किए? Chief minister. Okay, who appointed the governor of an Indian state? का द्वारा अपॉइंट करा जाए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट द्वारा इंडिया राष्ट्रपति द्वारा आमर कौन गवर्नर मानक अपॉइंट करा जाए। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द oath of office to the governor? Chief justice of the high court. Okay, high court रो chief justice शपथ पाठ करितांती ना। What is the term of office of the governor? केते वर्ष? 5 वर्ष। Hold office during pleasure during of the president. Which of the following not a power of the governor? Adjourning the legislative assembly. Was the first woman governor of a state in independence India? Sarojini Naidu na first woman governor. If no party has a clear majority, the governor act at his or discretion. Who is the highest law officer of a state? Advocate general na? Advocate general. Who is the constitutional head of the state government? Governor. Which article is related to the appointment of the governor? प्रत्येक स्टेट रे हमर ऑफिस फिल 6 month. Okay, what is the minimum? 35 years. Who administers the oath of the office to the president? Chief justice of India. If the president he address his resignation, vice president. Who can initiate the impeachment? Parliament. Under which articles does the president have the power to grant pardon? Article 72. Under which article can declare financial emergency? Article 360. What type of veto power does the president have? Absolute veto, suspensive veto, pocket veto. Who was the first president of India?
Dr. Rajendra Prasad, who are included in the Electoral College for presidential election, elected member of parliament and state legislative assemblies. Okay, nominated member are not included. Okay, under which article does the president have the power to grant pardon? Article 72. Who can initiate the impeachment process against the president? Either of the parliament. Okay. So thank you for watching this video. Have a great day. Jai Jagannath. Bye bye. Take care. Jai Jagannath.